लेकिन बहुत ज्यादा कंटेंट रहता है तो फिर उसमें डायग्राम्स वगैरह बनाने का स्कोप बहुत कम रहता है। डायग्राम्स का स्कोप एक्चुअली बहुत कम रहता है, बट हर क्वेश्चन में स्कोप होता है कि आप फ्लो चार्ट बना दो। कि वो आदमी गरीब है तो उसका बच्चा भी गरीब ही रहेगा। यस, इसमें अगर डेटा भी ना हो ना आपके पास, तो डायग्राम के थ्रू यू कैन जस्ट शो कि रिड्यूस हुआ है या इंक्रीज हुआ है। हाँ, यस, सर GS2 में जहाँ पे कोई भी स्टेटिस्टिक्स दिखाने होते हैं ना, वहाँ पे एक पाई चार्ट या फिर बार डायग्राम बहुत अच्छा काम करता है कि सुप्रीम कोर्ट सपोज वैकेंसीज दिखानी है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर पेंडेंसी दिखानी है कोर्ट्स की, तो सुप्रीम कोर्ट की एक बार डायग्राम बना दो और वहाँ पे मेंशन कर दो, तो बहुत इफेक्टिव वे लगता है। Hello, friends and viewers. Now I welcome you to the session of this answer writing discussion and how to deal with the particular subjects, be it a GS2, GS4, GS1, or essays also. So now in this session we are taking the GS2 syllabus. That will be topic wise. So I would like to ask some doubts if any of the participants have, so that we can discuss doubt this topic wise, or else we will take the paper as a whole. So anyone having any doubt? सर GS2 में मैंने ग्रुप पे डाला था कि कंटेंट की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन बहुत ज्यादा कंटेंट रहता है तो फिर उसमें डायग्राम्स वगैरह बनाने का स्कोप बहुत कम रहता है GS2 में स्पेशली। So one was that हाँ कि GS2 में you are very much right कि GS2 में जो है डायग्राम का स्कोप जो है काफी कम है। एंड कंटेंट वाइज सर कंटेंट वाइज तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ऑप्शनल भी है पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम है। So Ranveer and Aiman, they are our mentors. Friends, I would like to tell that we have specific mentors for each and every subject and essay and optional. So in this respect, with respect to GS2 paper, Ranveer and Aiman are supporting us as a mentor for GS2 and so I would request Aiman and Ranveer to say about this query. What you would like? So ये सही बात है कि it is not possible in every answer to have a diagram, especially in GS2. But क्योंकि योगेश ने जैसे कहा that he is from political science option and he has a good amount of content in it. Sir, एक question है मेरे सामने GS2 का, which is constitutional morality is rooted in constitution itself and is founded on the essential facets. Explain the doctrine of constitutional morality with the help of relevant judicial decisions. तो इस क्वेश्चन में जैसे डायग्राम का स्कोप बहुत कम है, बट स्टिल अगर योगेश को थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे काम करना है तो ही कैन मेक अ सर्कल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड in different dimensions he can write certain points of what constitutional morality stands. This can be done, or in some cases like relevant judicial decisions, तो एक timeline you can make about judicial decisions. अगर आपको बहुत अच्छे से judicial decisions याद हैं, you can make a timeline. In a lot of places you have this scope of making a timeline of judicial decisions. So that way you can put in some diagrams and some sort of presentation in case of GS2. The doctrine, some evolution through judicial features. So I think this can be one way of adding diagrams in GS2 answers. In GS2 I think sir mostly flow charts work very well, क्योंकि डायग्राम्स का स्कोप एक्चुअली बहुत कम रहता है, बट हर क्वेश्चन में स्कोप होता है कि आप फ्लो चार्ट बना दो कोई, या फिर विशियस साइकिल्स, जो पॉवर्टी हंगर के क्वेश्चन है वहां पे उनका स्कोप होता है कि एक साइकिल दिखा दो। So in this aspect, आप इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, for example, as Rajashree said about the poverty, so you write reason 1, okay, 1, 2, 3. So all this will be what, like poor nutrition, poor education, jobless, low livelihood.
and then you say 4, and then again. So you see, so if you again go back to the same cycle, so this will be intergenerational poverty. Getting the point? Intergenerational poverty in the sense कि वो आदमी गरीब है तो उसका बच्चा भी गरीब ही रहेगा क्योंकि वो इस साइकिल से बाहर नहीं आ पाया. But in another diagram or in the same diagram, if you put a stop here and you say income oblique livelihood as a solution, then you will be able to take that person out of this cycle. So this एक ऐसा cycle बनाकर और थोड़ा इसमें आप बता दें कि this is the stoppage. This is how we break the cycle by providing him a income base or a livelihood so that he can get out of this cycle. Okay, हाँ योगेश कुछ बोल रहे थे? सर मैंने एक पीडीएफ शेयर की है ग्रुप पे, वो एक जनरल फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स के लिए है, वो भी एस्पिरेंट्स देख सकते हैं, उनको हेल्प करेगा. Okay, I'll open it. Yes, very good. So yes, Aiman, explain one or two diagrams. सर लाइक ये जो वेट वाला डायग्राम है ये मैंने बहुत यूज किया है, जो फर्स्ट कॉलम में है. इसमें आप प्रॉज एंड कॉन्स के लिए आप ये डायग्राम यूज कर सकते हो, जस्ट इन केस जैसे आरटीई पे क्वेश्चन आया है तो यू कैन मेक सच अ डायग्राम. और एक एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी वाला डायग्राम्स होते हैं जिसमें आप लेट्स से हंगर के केस में है तो उसमें आप ये ट्रायंगल वाला डायग्राम यूज कर सकते हो. फैक्टर्स अफेक्टिंग समथिंग जिसमें आप जो सेकंड डायग्राम Okay. So factors so affecting something affected by something, so you can make this circular diagram that's there. yes. So So a this lot is of very it can good be thing. used. These diagrams you can use in the GS4 paper also. GS4 and GS3, sir. Yes, GS4 also and GS3, GS2. So these are very useful thing which you can use in any paper. Of course, जो GS1 है, that is of more of geography and history. तो उसमें तो हमें specific diagrams use करने ही है. But yes, GS2 and GS3 4 में. Okay. सर मैं पूछा था राजश्री मैम से कि आप फ्लो चार्ट बोल रहे थे तो वो पॉलिटी के किसी क्वेश्चन का आप एग्जांपल दे सकते हैं? पॉलिटी के क्वेश्चन में तो देखो क्वेश्चन हम कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले सकते हैं. फ्लो चार्ट जैसे कि अभी देखो स्क्रीन पे जो डायग्राम है तो दैट इज अ फ्लो चार्ट व्हिच कैन बी यूज्ड इन एनी क्वेश्चंस कि आपको कहीं के कॉजेस दिखाने हैं तो कॉजेस लिख दो और एरोज निकाल दो, 4-5 एरोज निकाल दो, कॉजेस लिख दो. अगर आप बहुत सारे टॉपर्स की कॉपीज में भी देखेंगे तो सेम दिखेगा आपको. Yes. So Yogesh पूछ रहे थे कि what about some example with respect to flow chart in this GS2. So there was a question on this article 112. What are the budget and what are the components of the budget? ठीक है, and how do you differentiate between? So you start with this article 112 और फिर उसमें then you write capital, revenue. and the capital के what are the capital के जो भी आपके हाँ इस तरह से ठीक है, and then revenue, salary, subsidy, pension. Okay, so okay, before that you can divide this into this also. Before this you can divide this into receipt and expenditure, receipt and expenditure. तो कैपिटल रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाउ. अब ये देखो, अब जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो ऑब्वियसली ऐसे ये बढ़ता जाएगा. सो यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ, तो ये तो आपको बेसिक्स आपको पता ही है. सैलरी, सब्सिडी, पेंशन एक्सेट्रा. तो दिस वाज जस्ट वन एग्जांपल. लाइकवाइज आपको देखिए 7 to 10 जो क्वेश्चन है which you attend in last 10 minutes, what do you do?
11 to 20 पहले अटेम्प्ट करते हैं, एंड देन यू स्टार्ट फ्रॉम 1 to 10, और अदरवाइज 1 to 5 पहले अटेम्प्ट करते हैं, 11 to 20 बाद में अटेम्प्ट करते हैं, एंड 6 to 10 बाद में अटेम्प्ट करते हैं. So anyhow 6 to 10 will be the last only. So 6 to 10 वाले जो क्वेश्चंस हैं, there you can use these diagrams. Getting the point, Yogesh? Okay, sir. हाँ sir. Okay. So ये भी है, ये देखो at the end of the day this is very clear that GS2 के पेपर्स में डायग्राम पे ज्यादा स्कोप है नहीं. So that scope on you can generate that scope only by practicing. Okay, let's pick some question. Sir, in this particular PDF, there is one diagram which is related to GS2 on local self-government. If you scroll it down. Sir, I think it's in page 4 or 5. So this one, the LSG funds, functions and functionaries issue. So you can create such diagrams for certain topics. Okay, जैसे अभी आप इसमें से देख लीजिएगा. This is for the information of everyone. That please go through this PDF and take out these very well established diagram like this. ना देखो question तो आएगा ही with respect to 73rd, with respect to PRI bodies, with respect to all these things. तो वो ऐसे ही, because this is a part of syllabus और हर साल एक क्वेश्चन आता है. तो this is a well established diagram. अब इसमें आप इसको पिक करके आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे अपने हिसाब से, that is up to you. ठीक है, लेकिन बेस टेम्पलेट यही रहेगा. that is the heading of this PDF itself. तो बेस टेम्पलेट यही रहेगा, आप यहाँ से पिक कर लीजिए. सर GS2 में जहाँ पे कोई भी स्टेटिस्टिक्स दिखाने होते हैं ना, वहाँ पे एक पाई चार्ट या फिर बार डायग्राम बहुत अच्छा काम करता है. कि सुप्रीम कोर्ट सपोज वैकेंसीज दिखानी है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर पेंडेंसी दिखानी है कोर्ट्स की, तो सुप्रीम कोर्ट की एक बार डायग्राम बना दो और वहाँ पे मेंशन कर दो, तो बहुत इफेक्टिव वे लगता है. तो पाई चार्ट एंड बार डायग्राम दोनों भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं. कि जैसे या फिर ग्राफ दिखा दो कि पॉवर्टी का ग्राफ दिखाना है कि सपोज 2001 में इतनी थी, 2022 में इतनी है, तो एक ग्राफ दिखा दो जहाँ पे से डाउनवर्ड्स आ रही है पॉवर्टी. So let's start with the 1950. Okay. Yes. And today is 2021, census wise, or 23. So 23 is the latest. You might not have data about that. So you write 20 or 21, whatever you like. So उस time पे poverty around 50% of the population or more than that was. So this you write population. जी. And इसमें क्या होता है ना कि इसका yes. इसमें अगर डेटा भी ना हो ना आपके पास, तो डायग्राम के थ्रू यू कैन जस्ट शो कि रिड्यूस हुआ है या इंक्रीज हुआ है. हाँ, yes, exactly. बस ठीक है. And about the diagram, since we are discussing, so obviously आपको जो labeling है, which I was discussing in the first session itself, labeling आपकी बहुत proper होनी चाहिए. You might be you can provide a little data, but labeling should be proper. See, graph है तो उसका x axis और y axis you have to be very clear. लिखना है x axis में क्या है, y में क्या है. And since it is a diagram, it has to be enclosed in a proper box. And then you below this you write figure declining poverty levels. ठीक है, थोड़ा सुंदर बनाना है पेपर. वो criminalization of politics का भी दिखा सकते हैं. Yes, sir, exactly. I was about to say this, that the same thing can be used about the criminalization of politics, or how number of debates have decreased in the parliament. So once you have these statistics, you can convert them into these graphs. Yes, exactly. और अभी प्रैक्टिस करने से ही वो आएगा कि किसमें ग्राफ बना दें, किसमें पाई चार्ट बना दें, किसमें ये बार ग्राफ बना दें. वहां पर बैठेंगे अचानक से वो सोचेंगे तो नहीं, तो अच्छे से डायग्राम बन भी नहीं पाएगा और टाइम वेस्ट भी हो जाएगा उस डायग्राम को बनाने में. तो प्रैक्टिस कीजिए. टारगेट एटलीस्ट यही रखिए कि 20 क्वेश्चन है, उसका 20% भी लेकर चले तो 4-5 क्वेश्चन में डायग्राम बन जाए, सो दैट पेपर जो थ्रू आउट है जो मोनोटोनस ना लगे.
बस इतना तो टारगेट रख सकते हैं कि 4-5 क्वेश्चन में तो मैं बना ही दूं डायग्राम।